Assalamualaikum students. Today we are going to discuss nutrition for mentally ill or persons, patients or in physically handicapped, rehabilitation. This is the last topic of nutritional services for patients. Inshallah today we will discuss nutrition of the physical handicap. Handicap itself is a principal factor that favors malnutrition or poor intake or due to poor nutrition or not taking balanced diet is affect the potential capacity and the use of one arm, stiffness, painful joints, uncoordinated movement are promote in difficulties in feeding on self or limit the performance of simple kitchen tasks such as opening packages or peeling vegetables. The energy balance is important. Either a normal person or any patient physically handicapped. Some physically handicapped persons increase their energy requirement or increase their energy intake because more effort is required to perform their daily tasks. However, the person using wheelchair may be chances to become obese because use less energy to do their daily task, or some handicapped persons intake is low, so increases the chances of tissue depletion or weight loss. Excessive calcium losses from bones and constipation is also complication of those who are immobilized or physically handicapped, bedridden. So in those patients, fiber supplements or fruits, vegetables are recommended. Fluid requirement or fluid intake is also important in case of constipation. Good protein nutrition or good protein is essential for restoration of body tissue or skin. If the protein intake is good, then it may be reduce the chances of infection in starting or initial stage of immobilization. The ulcers are common or in bedridden or handicapped persons. Nitrogen losses are more, so increases the nitrogen losses. So due to all of these factors, the good protein intake is essential. Nutrition of physically handicapped. In physically handicaps इनमें malnutrition प्रेजेंट होती है, मोस्ट कॉमन होती है, क्योंकि जो इनका न्यूट्रिएंट इनटेक होता है उसमें इम्बैलेंस होता है। सम पेशेंट्स जो उनका रिक्वायरमेंट कम होगी और वो ज़्यादा इनटेक होगा, इसी तरह कुछ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और उनका इनटेक है। वेट लॉस, वेट गेन, ओबेसिटी मेन जो इश्यूज़ हैं इन हैंडीकैप्स। उसके अलावा इनकी जितनी मीट एंड मीट प्रोडक्ट की सर्विंग्स है उतनी वो समटाइम्स कंज्यूम नहीं करते। कॉन्स्टिपेशन इनमें कॉमन होती है क्योंकि इनका फिजिकली एक्टिविटी नहीं कोई होती, और कॉन्स्टिपेशन फिजिकली एक्टिविटी बोथ आर कनेक्टेड और लिंक्ड विद ईच अदर, क्योंकि अगर फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, उनका वाटर इनटेक कम है, तो उनमें जो और फ्रूट्स और वेजिटेबल का उनका इंटेक कम है तो उनमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगी, कैल्शियम लॉसेज इनमें ज़्यादा होते हैं, बोन इश्यूज आते हैं। और उसके अलावा इसमें डाइटरी मैनेजमेंट इनमें रिहेबिलिटेशन अगर कर रहे हो या जब इनको कोई भी फूड प्रोवाइड करते हैं तो उसमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो इनकी
रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, फूड क्वालिटी ठीक है, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर और उनकी अकॉर्डिंग टू देयर सर्विंग, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जब आप उनकी डाइटरी मैनेजमेंट, डाइटरी पैटर्न, डाइट प्लानिंग करते हैं तो जो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि इन अदर फैक्टर्स को वो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट हो। The nature of the rehabilitation basically rehabilitation is a process in which return the handicapped person to maximum potential, toward maximum potential, to his or her maximum potential, what the person will be able to do in the future. Rehabilitation centers or rehabilitation is provided in different centers in schools for handicapped children or in home. In rehabilitation, income or the economically sport is play a role or effective role. For example, the session, how much or how many session is provided in month, week is depend upon income of the family or the individuals or person patient experience different type of difficulties or physically, emotionally, mentally, including frustration, pain, or rehabilitation is a slowly process that affect or both physically and mentally, emotionally. In rehabilitation team, doctors, physicians, nursing or nurses, paramedic staff, occupational therapists, physical therapists, or speech language pathologist, dietitian, social worker, psychologist, educators, they are work together to provide rehabilitation services. इन रिहेबिलिटेशन जब किसी भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन की रिहेबिलिटेशन की जाती है तो उसमें उसकी फिजिकली रिहेबिलिटेशन और मेंटली फिजिकली रिहेबिलिटेशन से ज़्यादा होती है क्योंकि समटाइम जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रस्ट्रेशन या के लिमिटेशन ये सारी चीज़ें वो जब अकेले होंगे सोचेंगे कि हम अपने जो भी डेली टास्क है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं या इवन के समटाइम्स वो एक ग्लास जो पानी का होता है वो नहीं पी सकते तो इसमें उनकी जो इमोशनली मेंटली जो रिहेबिलिटेशन होती है उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं उनका मेन रोल होता है अगर कभी कोई भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होगा और उसके अलावा डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल्स होते हैं स्किल्ड पर्सन्स होते हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं self help devices for eating various devices have been designed that help in eating in which spoons forks knife for cutting plates or glasses tubes for example a glass with holder or other devices that help in eating. Nutrition for mentally ill or nutrient deficiencies are very common. For example, in schizophrenia, celiac disease is common. So, treated with gluten-free or cereal-free diet is reported improvement in
symptoms or with mega doses of niacin. However, some studies show that restriction of a specific nutrient or only provided or intake of specific nutrient and relationship is between nutrient specific nutrient intake or restriction of the specific nutrient intake and the improvement or the improve the symptom of any disease is not clear. Good nutrition is or balanced diet is only treatment or dietary treatment. So the texture. However, some food services centers or cafeterias allow the patient to select the food according to their choices. However, in psychiatric or mentally ill patients, low intake or excessive intake is very common. So, for in eating disorders, this is very common. Refuse to eat in psychiatric patient is very common or presented the main issue or problem. So the fear of weight gain or other issues that may be lead to refuse to eat. For example, the patient with eating disorder or anorexia nervosa. This is common issue in nutrition for mentally ill. Basically इसमें sometimes मेंटली डिसऑर्डर्स में ये होता है कि उनको अगर डेफिशिएंसीज एक तो कॉमन होती है और समटाइम्स उन्हें लगता है कि ये जो खाना है या कोई भी ऐसी चीज़ है ये हमें इसकी वजह से हमें ये डिज़ीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सीलिक डिज़ीज़ ये इनमें कॉमन होती है तो उनको एक स्पेसिफिक डाइट जिस पे वो ग्लूटेन फ्री होगी वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह उनको सब जो वाइटमिन्स हैं मिनरल्स हैं उनसे उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन कुछ स्टडीज़ इसको सपोर्ट करती हैं और कुछ स्टडीज़ है वो इसको सपोर्ट नहीं करती। वो कहते हैं कि बैलेंस डाइट जो है वही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा जब इनका डाइट प्लानिंग की जाती है तो उसमें मेक श्योर किया जाता है कि जो भी फूड प्रोवाइड किया जाए उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसका टेस्ट, ये सब कुछ पेशेंट को प्रमोट करे या पेशेंट के लिए उसे हेल्प करे कि उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए, वो अपीलिंग हो। और इसके अलावा समटाइम ये होता है कि पेशेंट जो है वो खाने को रिफ्यूज़ कर देती है कि उन्हें फ़ियर होता है कि उनका वेट गेन हो जाएगा या कोई भी अदर इशू होता है या कोई डिज़ीज़ होती है जिसको वो शो नहीं करते। और इन पेशेंट्स में फिर अगर वो ईटिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं तो उनमें खाना या तो बहुत ज़्यादा वो खाएंगे या बहुत कम खाएंगे। तो इस तरह के इश्यूज़ भी सारे कॉमन हैं।